Hello, beautifuls. Welcome to my channel. It's your girl Snowflake, and today I have bought a beautiful collection for you guys of dresses. And trust me, you're gonna love those dresses because I know everybody want to go on vacation and have a blast of dresses. So trust me, you will love it. So do watch till the end. So the very first dress we have is this smoked A-line dress, which is I got for like 1341 rupees in the size XS. And guys, trust me, I always had an eyes on such a dress ना जिसके अंदर ये color combination हो like the brown and blue. ये color combination इतना ज़्यादा trending है कि I had to got my hands on this one. और मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई द वे ए लाइन नेक इज लुकिंग ना एब्सोल्युटली प्रिटी। और इसका जो हर एक जगह जो पूरा एक बॉर्डर दिया हुआ है ब्राउन का कॉम्बिनेशन एंड द ब्लू, वो बिल्कुल टॉप नॉच है। और जो साइज है वो भी मुझे परफेक्टली फिट हुआ है। बस मेरी कोई वेकेशन की टिकट्स करा दो और मैं अभी के अभी जाने के लिए रेडी हूँ फॉर श्योर। सो यस, आई लव दिस ड्रेस। दिस इज 10 out of 10. Next we have is smoked A-line dress, which I got for like 952 something rupees. I'll mention the exact price right here. And in the size of XS, that's how it looks in the picture. And that's how it looked on me. Guys, again, trust me, this dress is also really trending, like the polka dot dress and with the scarf. Wow, just wow. I have gotten crazy for such dresses or such tops, even the tops which has scarf. Like, पहले क्यों नहीं था ये सब? पहले कहाँ था ये सब चीजें? But whatever, जो भी लाया, I'm so proud of you, girl. Like, if a girl bought it, then I'm proud of you, and if a guy bought it, I'm proud of you. So when we talk about the dress now, it fits me so perfectly on my body. The scarf looks perfect. The overall dress looks on me so pretty. It's just key, I just want a dress to be a little bit shorter, because if the dress has to be long, then it should be completely long, and if the dress has to be short, it has to be shorter and shorter. But this dress, just because it has this polka dot effect and the scarf both in one dress, it's definitely 10 on 10. The quality is 10 on 10, and the pricing is also 10 on 10. Girls, if you plan a vacation after this, please take me with you guys. Next up we have is this slit bodycon dress, which I got in the size of XS, and I'll mention the correct amount right here. So I kind of love this dress so much because it मेरे दिल में एक प्यारी सी जगह है bodycon dresses के लिए. Because if you give me any kind of bodycon dress, I will just fall in love with that dress. And this dress, it looks absolutely gorgeous, like baby pink white combination. इतना प्यारा लग रहा है वो. And if you will wear that on a kind of a beach with that seashell jewelries, and oh my god, it will look so pretty. So yeah, I kind of love this dress, and body पे तो perfectly fit कर रही है. तो yeah, it's a must try. Next up we have is this twist A-line dress. That's how it looks in the picture, and I got it in the size of XS for like 800 something. I'll again mention the price right here. I just love this dress. Why? Let me tell you the reasons. Because first of all, it is giving me that extra glow on my face. You know, that Korean color theory, it is real, guys. Matlab, the bodycon dress I wear just right before this one, like the pink and white one, it was just making me look a little bit dull. But this dress gives me a extra glow on my face. So that's how it is. इससे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि डोंट थिंक कि ये ड्रेस दिखने में वीडियो में ऐसी लग रही है वैसी लग रही है. जस्ट सी कि हाउ इट फिट्स, हाउ द कलर लुक्स, हाउ द क्वालिटी इज, बिकॉज it might look more beautiful on you because of your body, the way you carry it. So it also depends on that. Here right now are the videos where I'm just trying the dresses. I'm not like कि मैं कहीं जाने के लिए completely ready हूँ, because if you will get ready, it will look more beautiful on you. So yeah, think from that perspective as well. Right now we were talking about this white dress. I love this dress. Why? Because first of all, the heart shape. I totally love such kind of dress. Even this top has that shape. So मुझे ऐसे shapes की dresses और tops काफी ज़्यादा पसंद है, which makes my neck so much visible. So yeah, I love those dresses. And the way वो जो tie करने के लिए दिया हुआ है, and it's backless and it's short. Yes,
I just don't like one thing, the way मैंने वीडियो में भी दिखाया है, I have shortened the dresses और तब ये बहुत ज़्यादा beautiful लग रही है, but actually में इसकी length थोड़ी सी लंबी है, just like the dress I showed you right before. तो इसका लेंथ थोड़ा सा लंबा है जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, और इसीलिए मैंने शॉर्ट करके भी दिखाया है कि भाई अगर मैं थोड़ा उसको छोटा करती हूँ तो वो कैसी दिखती है, और मुझे वो ज़्यादा वैसी अच्छी लग रही है. बट टोटली लव द ड्रेस, नॉट किडिंग. It's a must, and it's must vacation dress. Bhai, imagine yourself in this dress on a beach. My God. Love it. Next we have is slit bodycon dress. That's how it looks in the picture, and it was like around 1500, and I got it in the size of S. And among all the dresses, this dress is my absolute favorite. Absolute favorite. I'm looking super gorgeous in this dress. The way it has a net pattern in front, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो नेट का पैटर्न पूरा यहाँ पे. And the way it has to be tied on the back, it's backless, and the way it has a cut on the side, and वहाँ पे भी frills दिए हुए हैं. Oh my God, क्या ही चाहिए अगर एक ही ड्रेसेस में इतना सब कुछ मिल जाए तो इसीलिए मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा लाइक बॉडी हगिंग ड्रेस है, लाइक बॉडी कॉन ड्रेस से भी ज़्यादा बॉडी हगिंग ड्रेस है ये. मैं कैसे समझाऊँ इसको, पता नहीं कैसे समझाऊँ, बट इट्स so body hugging, so comfortable, and the cloth is also like very soft. You know, I just feel so beautiful in this dress. You know, like it girl. And I never used to purchase like a green color of dress, but this color is looking so pretty. So pretty. मैंने अपने आप को ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है on a beach with all these dresses. So I'm already loving it. Next dress we have is this polka dot dress again, and this is I got it like in the size of XS for I think 1300 or 1200. Yeah. This color I've got it like for the very first time, like इतना pinkish, like proper pink color मैं पहली बार खरीद रही हूँ. So it is making my skin look a little bit dull, but the moment I wore this dress, I kind of feel like it doesn't suit me. Maybe the color, because it's so vibrant ना. I've never wore such vibrant colors, और ये बहुत ज़्यादा ऐसा आँखों में आ रहा है कलर. तो ड्रेस प्रिटी है, ड्रेस का पैटर्न प्रिटी है, साइजिंग इज परफेक्टली फाइन, क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, लेकिन द कलर इज सो वाइब्रेंट. आंखों में चुभता है ना कोई कलर, वैसे ही आंखों में मेरे चुभ रहा है. तो आई डेफिनेटली डिडंट लाइक दिस कलर, बट द ड्रेस इज सो गॉर्जियस. इसका पैटर्न, द डॉट्स, एवरीथिंग, द कलर कॉम्बिनेशन इट हैज, लाइक द brown and pink combination, it looks so pretty. Next we have is this a bow dress, which is like in the size of XS, and I got it for like around 1400. So I'll mention the exact price right here. I am a person who is crazy about this color, like butter yellow color. मैं पागल हूँ इस कलर के पीछे. अगर कोई मुझे बोलना कि ये कलर, तो मैं खरीद ही लूंगी, भले वो चीज कैसी भी हो, बट वो कलर बहुत. So the dress is definitely 10 on 10. Let me tell you the reasons why. इसमें दो चीजें दी हुई हैं, एक है पीछे बेल्ट बांधने के लिए और एक है यहाँ पे थ्रेड बांधने के लिए. तो जब तुम उस डोरी को बांध रहे हो ना, वो इतना प्रिटी लग रहा है, और पीछे से जो तुम बो बना रहे हो ना, वाव लग रहा है. एंड द वे इट हैज दैट स्निच्ड पैटर्न एंड देन बेल पैटर्न, एब्सोल्युटली प्रिंसेस वाइब यार. मतलब I love it. It is definitely a kind of a vacation dress, but also birthday dress. Overall, a must-try dress. Next up we have is this bow A-line dress. That's how it looks in the picture, and I got it in the size of XS and for around like 1800. I totally love this dress. Like when I looked at this dress on Savannah, I felt like I'm some kind of like Victoria. मुझे इतना वो princessy vibe आ रही थी ना, that I had to get my hands on this dress, and it actually looks like that, like princess vibes, totally princess vibes. The color, the checks pattern, the bell pattern, and then again the snitched pattern, it looks top notch. I don't have to say anything, the dress speaks for itself. I mean, next I have is this backless bodycon dress, which I got in the size of XS for around 600, 650 something. It is totally giving me that party vibe, you know, party vibe, club vibe, beach vibe. कहीं भी पहन सकते हो. It is like very simple dress and yet beautiful.
यहाँ पे जो 2 गोल्डन बकल्स दिए हुए हैं ना, वो इस ड्रेस को बहुत ज्यादा अच्छा दिखा रहे हैं। लाइक अगर आई थिंक वो 2 गोल्डन बकल्स नहीं होते ना, इट वुड हैव नॉट लुक ब्यूटिफुल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मैंने वो बकल्स पहले पीछे कर दिए थे पूरे, एंड मुझे ऐसा लगा था कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट व्हेन आई बॉट दोज बकल्स इन फ्रंट, इट लुक्ड ब्यूटिफुल और वो ड्रेस मुझे अच्छी लगने लगी। सो आई वुड से ऑल बिकॉज ऑफ दोज बकल्स मुझे ये ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आई। एंड इन दिस ड्रेस आई वुड नॉट से कि मुझे शॉर्टनेस का इश्यू लग रहा है। वाई? बिकॉज जिस ड्रेसेस में वो स्कर्ट वाला पैटर्न होता है ना, दिस ड्रेस हैज टू बी अ लिटिल बिट शॉर्टर एंड नॉट इन अ लॉन्ग पैटर्न. इट मेक्स यू लुक, आई डोंट नो, बैड. And this one, it is like a straight short bodycon dress, so it looks absolutely good because इसमें वैसा स्कर्ट वाला पैटर्न नहीं है, and in skirt patterns it has to be a little bit shorter. Guys, yes, you have to. And इसका बैग बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है. The criss cross pattern, it looks so beautiful. So yeah, it is a 10 on 10. Okay, so that is it for my video. I hope you guys love the collection of dresses for your vacation or anywhere you felt like dressing up these dresses. Do let me know in the comment section कि और क्या क्या videos मैं आपके लिए ला सकती हूँ. What more you want from me, and I will bring it at your door for sure. And after bringing all of these beautiful collections, still if you have not subscribed my channel, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं. So subscribe my channel right now. This is it for today's video. I hope you will actually like my videos. And I hope you genuinely like my videos. Even if you subscribe, it's up to you. But it's just key, it should be helpful to you and you just love my videos. That's all I want. And we will meet in the next video. Bye bye.